friends, welcome back to English with Yogita Kumari. Friends, in this video we are going to discuss 35 classroom English conversation sentences. So friends, what happen if you are a teacher in school and there's a compulsion you will use only English language in classroom, not Hindi or your native language? Then you can use these sentences which I'm going to discuss in this video and which you are going to learn in this video. Friends, it's my personal experience as an English teacher. I use these specific sentences and I don't think so except these sentences you need anything else. So this video is fully based on the conversation between student and teacher. So without wasting our time, let's get started. So friends, first one is good morning class. If it's time before 12 o'clock, you can say good morning class, and if it's a time after 12 o'clock, you can say good afternoon class. Okay. After this, you can say let's begin today's class. कि चलो आज की क्लास शुरू करते हैं. Next one is let me take your attendance. When you're going to take attendance, you can say कि चलो मुझे आपकी attendance लेने दो. You can say let me take your attendance. Next is everyone present today? You can simply ask क्या सभी आज क्लास में आए हैं, जहाँ कभी सभी क्लास में प्रेजेंट हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो इज एवरीवन प्रेजेंट टुडे. नेक्स्ट इज वेयर वर यू यस्टरडे. इफ योर स्टूडेंट वाज एब्सेंट यस्टरडे एंड यू कैन से कि तुम कल कहाँ थे. आप इंग्लिश में बोलोगे वेयर वर यू यस्टरडे कि तुम कल कहाँ थे. नेक्स्ट वन इज open your books at page 20. You will not use on. You have to say at because at is a specific place. So आप बोल सकते हो कि अपनी जो बुक का पेज नंबर 20 निकालो, तो आप बोलोगे open your books at page 20. Next is look at the blackboard. Means if you're going to write anything on a blackboard, you can say look at the blackboard, not on the blackboard. Look at the blackboard कि blackboard पे देखो. Next is pin drop silence. मीन्स कि सुई गिरने की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इतनी साइलेंस होनी चाहिए क्लास में. सो यू विल से पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज़ कि एकदम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. नेक्स्ट इज हु नोज द आंसर. इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन से कि कौन इस सवाल का जवाब जानता है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे हु नोज द आंसर. नेक्स्ट इज यस दैट्स राइट. इफ़ योर स्टूडेंट गिव राइट आंसर यू कैन से कि हाँ ये ठीक है. इंग्लिश में बोलोगे यस दैट्स राइट. नेक्स्ट इज हैज़ एवरीवन कॉपीड. मीन्स इफ यू हैव रिटन एनीथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, तो आप बोलते हो कि क्या सबने लिख लिया, एंड यू कैन से इन इंग्लिश हैज़ एवरीवन कॉपीड. नेक्स्ट सेंटेंस इज shall I rub this side. If you have written anything on blackboard and you do two part of a blackboard and there's a one A side and one is B side, and you can say क्या आपने इस तरफ का लिख लिया, and you can ask in English shall I rub this side. क्या मैं इस साइड वाला मिटा दूँ, उसको रब कर दूँ अगर आपने लिख लिया हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे shall I rub this side. नेक्स्ट इज get your notebooks checked. कि चलो अपनी नोटबुक्स चेक करवा लो. इफ़ यू गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स ऑफ योर स्टूडेंट्स यू कैन से कि अब अपनी कॉपीज़ चेक करवा लो. आप बोल इसको इंग्लिश में बोलोगे गेट योर नोटबुक्स चेकड. चलो अपनी बुक चेक करवा लो. नेक्स्ट इज हाउ डर्टी इज़ योर हैंड राइटिंग. इफ़ योर स्टूडेंट्स राइटिंग इज़ नॉट गुड एंड इट्स अ वेरी you can say dirty handwriting, and you will ask and you will say in English how dirty is your handwriting, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग कितनी गंदी है. नेक्स्ट इज हैव यू गोट योर टेस्ट चेक्ड. कि आपने अपना टेस्ट चेक करवा लिया. ओके, आप इंग्लिश में बोलोगे हैव यू गोट योर टेस्ट चेक्ड. And next sentence is say one by one. If you ask any question and your students saying ma'am, 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 okay, and this happen in classroom, and you can say one by one, एक एक करके बोलो, don't say ma'am, ma'am. Okay, so next one is I can't hear you, speak loud. If you ask any question and your students is hesitating and you know they afraid from teacher when teacher ask any question, otherwise they speak a lot.
सो यू कैन से आई कैंट हेयर यू, कि मैं तुम्हें सुन नहीं सकता या सकती, थोड़ा ऊंची बोलो, स्पीक लाउड. नेक्स्ट इज वेयर इज योर इंटेंशन. There's some kind of students when teacher is teaching and they don't pay fully attention in classroom and their mindset is on another side. So you can see where is your intention, कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है. Next is come out and write it on a blackboard. कि बाहर आओ अपनी सीट से और इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखो. आप इंग्लिश में बोलोगी come out and write it on a blackboard. Next is don't shout, be seated. Some students stand after every 1 minute and every 1 second, and you can say don't shout, शोर मत मचाओ, चिल्लाओ मत, be seated, बैठे रहो. be seated means बैठे रहो. Next is whose writing is best. इसकी अगर पूछना हो कि किसकी राइटिंग अच्छी है क्लास में या किस स्टूडेंट की, तो आप पूछ सकते whose writing is best, कि किसकी राइटिंग अच्छी है. Our next sentence is, why are you sitting idly? Study the lesson and don't waste your time. If your students are sitting free and they are not studying, and you can say them, why are you sitting idly, कि तुम free क्यों बैठे हो. Study the lesson, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसे पढ़ो, and don't waste your time, और अपना समय बर्बाद मत करो. Okay. So next is, you have scored very less in exam, कि तुमने एग्ज़ाम्स में बहुत कम मार्क्स गेन करे हैं. आप इसको इंग्लिश में बोलोगे यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस इन एग्जाम्स. नेक्स्ट इज व्हाई डिडंट कवर योर कॉपी. इट्स इम्पॉर्टेंट योर स्टूडेंट्स कॉपी शुड बी कवर. सो इफ द स्टूडेंट हैजंट कवर हिज और हर कॉपी, यू कैन से देम व्हाई डिडंट कवर योर कॉपी, कि तुमने अपनी कवर कॉपी क्यों नहीं करी. सो यू विल यूज डिडंट. Next is principal sir is calling me, wait a minute. If you have to go out from your class and you have to say your students I will be back. तो आप उसको बोल सकते हो principal sir is calling me and you can mention another work and wait a minute and I will be back. Next is give me your pen. If you have you want to take something from your student like pen, copy, pencil, you can say give me your pen, give me your copy, give me your book. Next sentence is, whose book is this. You're checking copy and you found that there's lots of mistakes your student has made. You can simply ask whose copy is this. ये किसकी कॉपी है, किसकी बुक है ये, जिसने इतना गंदा हैंड राइटिंग लिया और इतनी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स करी हुई हैं अपनी कॉपी पे. तो आप उसको पूछ सकते हो हुज बुक इज दिस एंड हुज कॉपी इज दिस. नेक्स्ट इज देयर विल बी हॉलीडे टुमारो. इफ देयर इज अ हॉलीडे एंड if there's a Sunday everyone knows about Sunday there is a holiday. So if there's any occasion you can say there will be holiday tomorrow. will be means रहेगा in the future, कि कल holiday रहेगा. Next is all students will learn this chapter. I will take a test which you taught in class and you can take a test tomorrow and after the holiday, and you can say all students will learn this chapter. I will take a test, कि मैं इस चैप्टर का इस लेसन का टेस्ट लूँगी और सब ये लर्न करके आएंगे और मैं टेस्ट लूँगी. आप इसको बोल सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स विल लर्न दिस चैप्टर. सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लर्न करेंगे. आई विल टेक अ टेस्ट, मैं इसका टेस्ट लूँगी. ओके. Our next sentence is, where is your diary. A diary, in some schools there is a diary work. It means student has to write homework of all subjects and they have to note on his or her diary. So you can say where is your diary. It's a copy type. तो कि आपकी डायरी कहाँ पे है. ओके. तो आप पूछ सकते हो where is your diary, कि तुम्हारी डायरी कहाँ पे है. If the students haven't bought his or her diary with him or her. नेक्स्ट वन, लेट मी चेक योर डायरी, कि चलो मुझे आपकी डायरी चेक करने दो, है ना. आफ्टर इफ देयर इज अ लास्ट 10 minutes and you write, you give a homework your students and you write on a blackboard and just simply orally say you have to learn this chapter. I will take a test. So what students do, they write on their diary, they note down on their diary.
So you can say let me check your diary, and after note down, you have to learn, you have to check their diaries. एंड यू कैन से लेट मी चेक योर डायरी, कि चलो मुझे आपकी डायरी चेक करने दो, बिकॉज आपको डायरी चेक करनी ही पड़ती है आफ्टर बिफोर फिनिशिंग योर लेक्चर एंड बिफोर गोइंग आउट ऑफ द क्लास. नेक्स्ट इज हैज़ एवरीवन सो डायरी चेक, क्या सबकी डायरी चेक हो गई है? यू विल नॉट लेफ्ट योर क्लास without checking diary, and if there's a student who hasn't checked his or her diary, you have to check and you have to confirm has everyone checked diary, क्या सबने डायरी चेक करवा ली है? ओके. एंड लास्ट one is okay, thank you class. We your lecture is over and you're going to left from class, you can say thank you class and see you tomorrow. Okay, कल मिलेंगे आपको, कल मीन्स योर इट्स जस्ट फेयरवेल टाइप सेंटेंस कि थैंक यू क्लास, सी यू टुमारो, कि कल मिलते हैं. यू कैन सिंपली से एंड यू कैन लेफ्ट फ्रॉम योर क्लास. So friends, I have covered 35 classroom English conversation sentences in this video. So tell me in comment section which one sentence do you like the most, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. See you in next video.